So, hello students, welcome back to Ediverse. तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट्स होगा वो होगा बेस्ड जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम कवर्ड उसी कॉन्सेप्ट पे। तो आज हम सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। PYQ से आया है, राइट? सो पहला क्वेश्चन है पार्टिकल goes in a straight line so that it displacement at any time t is given by squared is equal to 1 plus p squared. Sure. Its acceleration at any time t is x to the power of minus n. So at n is equal to an integer. Okay. या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या डिपेंड करता है कि रेक्टिलिनियर मोशन है, राइट? तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया गया टाइम के रिस्पेक्ट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही है ना? डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्स के टर्म्स में होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस p square. Now we'll differentiate with respect to time. So we'll have 2x dx by dt is equal to 2p. 2 तो कट जाएगा, तो dx by dt can be represented as t by x. है ना? तो ये तो आगे हमारा वेलोसिटी है ना, और हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। फिर से डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास होगा dx square by dt square is equal to 1 into x minus t into dx by dt all divided by x का नाम। आपको कोशेंट रूल आना चाहिए डिफरेंशिएशन के लिए। ये कोशेंट रूल से लगता है पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, फिर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर minus the numerator into differentiation of the denominators all divided by the denominator square. तो ये आता है x minus dx by dt क्या था? t by x, तो हम वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। all divided by x square तो है ही, so we'll have x square minus t square divided by x cube. यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है ना। तो एक्स स्क्वायर क्या है क्वेश्चन में दिया गया है ना? तो this will be 1 by x3 which is x to the power minus 3, so n is equal to t. क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया ना x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमने वही सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ। अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कट जाएगा ये 1 by x2 आता है, n हमारा 3 है। Now moving to the second question. A particle initially at rest starts moving x is equal to 0 along x-axis with velocity in feet at radius at v is equal to 4 root x meter per second. The acceleration of the particle with
यहाँ पे हमें वेलोसिटी दी गई है, तो वेलोसिटी है 4√x मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन में पता है क्या होता है, dv/dx, v इंटू dv/dx। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है, x के रिस्पेक्ट में है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट क्लास में कि अगर x के रिस्पेक्ट में है तो v इंटू dv/dx कर लेता है एक्सेलरेशन के। तो दिस विल बी 4√x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4√x will be 4 into 1/2√x. 4 4 are 16, 16/2 8. Root-x or root-x कट जाएगा। Third question state. Particle is moving in one dimension along x-axis under the action to variables. Its initial position was 16 meter. The right of origin. The variation of its position. So with time t is given as x is equal to minus plus 18 square plus 16t, where x is in meter and t is in seconds. So returned the velocity of the particle when it accelerated, it becomes 0. यहाँ पे ये बताया गया कि हमारे पास एक इक्वेशन है x का जो है डिस्प्लेसमेंट, पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी, तो -3t³ plus 18t square plus 16t. Now we need to find velocity. Velocity will be dx by dt, right? So it's going -9t square plus 36t. Alright, plus 16 is equal to 0. Right. और हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है जो है dv/dt है। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे 18t plus 36 और हमें एक्सेलरेशन 0 पुट करना है, तो -18t plus 36 is equal to 0। यहाँ से t आ गया 2 और हम इस t को इसमें फिक्स करेंगे, तो वेलोसिटी हमारा आ जाएगा -9 into 4 plus 36 into 2 plus 16, which is -36 plus 72 plus 16, 36 plus 52. Velocity on 52 meters per second. Right? There was this atom. Partition goes there. A particle is moving in a straight line
such that its velocity is increasing at 5 meters per second per meter. Right. The acceleration of the particle it's dash meter per second squared. At a point where its velocity is 20 meters per second. Acceleration is v into dv by dx. जो ये 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर है, ये तो dv by dx ही हुआ ना, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड हमारा हो गया वेलोसिटी एंड इट इज इंक्रीजिंग 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर. तो x के रेस्पेक्ट में वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो चेंज ही हो रहा है. तो 5 एक्चुअली हो गया dv by dx एंड v हमारा पता है 20 हो गया. एक्सेलरेशन हो गया हमारा 20 into 5 which is 100 मीटर पर सेकेंड. एक क्वेश्चन एक्चुअली वो सिंपल थी, पर ये लैंग्वेज समझना जरूरी नहीं था. राइट. A card covers AB distance with first to 1/3 at velocity v1 meter per second. Good. Second 1/3 at v2 meter per second. And last one at v3 meter per second. If v3 is equal to 3v1 and v2 is equal to 2v1, then v1 is equal to 11 meter per second. Then the average velocity of the car is the dash meter per second. तो एक डिस्टेंस है, राइट. डिस्टेंस तो वन देंगे एंड ऑल. A and B we are dividing into 3 parts, right? First part में v1 velocity, v2 and v3. या फिर टाइम t1 लगा है, टाइम 2 t2 और टाइम 3 t2, right? और distance equally divided d by 3 d by 3 d by 3. T1 will be d by 3 by v1 and T2 will be d by 3 by v2. T3 will be d by 3 by v3 क्योंकि time is equal to distance by speed. Right. तो हमें find out करना है average velocity जो हो गया total distance by total time. Total distance हमारा d है. Total time t1 plus t2 plus t3. हम सब ऐड कर देंगे, है ना. d by 3. क्या काम करेंगे यहाँ पे भी हम कॉमन डिनोमिनेटर कर लेंगे. v1 plus d by 3 v2 d by 3 v3. अब क्या है, अब आसानी है. d by 3 कॉमन ले लेंगे तो v1 v2 v3 plus v1 v3 plus v1 v2 all divided by v1 v3. कैल्शियम ले लिया, d कट जाएगा. 3 v1 v2 v3 चला गया न्यूमरेटर में and we are left to it. हम सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज. v1 10 है, v2 22 क्योंकि 2v1 है ना. 2v1 मतलब 22 हो गया.
और v3 भी 33 हो गया. 22, 33 plus 11, 33 plus 11, 20. सबको सॉल्व करते हैं 80 मीटर सेकेंड्स. Yes. अब एक सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Question 6. It is similar. If the velocity of a body related to displacement x is given by v is equal to 5,000 plus 24x meter per second. And then the acceleration of the body there. Isn't it? Sorry. Just a minute. और हमें एक्सेशन फाइंड यहाँ पे भी देखो सिंग वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमें डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट नहीं कर, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. क्रेडिट फॉर एक्स यू डिफरेंशिएशन 1 by 2 root of related to x स्टैंडर्ड ट्रांजिशन आइडेंटिटी पर होगा. So speed 12 meter per second start to 124. Well trained. The last question again. The distance x covered by a particle in one-dimensional motion, then varies with time t as x² is equal to 80 square plus 2vt plus c. Okay, the acceleration with Thailand. Because the other thing, depends on x as x to the power of minus n. So where n is an integer, the increment of 10x. It may same here. Right. So x square दिया है 80 square plus 2bt plus c. And differentiate with respect to time, we'll have to it dx by dt is equal to 280 plus 2b. 2 कॉमन निकाल लेंगे तो x and dx by dt will be 80 plus b. And the velocity is equal to dx by dt will be 80 plus b by x. Now differentiate with respect to time. dv by dt is equal to and forward towards at night x the square right, that's 8 quick plus medium going to spine divided by x about
Yeah. हम एक्स्ट्रा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एक्स्ट्रा जो था 80 स्क्वायर प्लस 280 प्लस तो 80 स्क्वायर प्लस 280 प्लस AC minus T squared please and I way to divided by x cubed is equal to AC minus B square by x. अब देखो उन्होंने बोला था कि acceleration of the particle depends on x है ना, इक्वल टू नहीं बोला है तो ए बी सी तो कांस्टेंट ही है. तो acceleration is dependent on 1 by x cube which is dependent on x to the power minus 3 and is equal to 3. तो अब समझ रहे डायरेक्टली वो इक्वल टू नहीं बोल रहे, वो ऐसा बोल रहे कि वो डिपेंड हो रहा है. तो जब डिपेंड होने की बात आती है तब हम प्रोपोर्शनल लगा देते हैं तो n की वैल्यू 3 राइट. तो ये सब तो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. और भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है पर हम उससे बाद में कवर करेंगे. अगले लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में समझेंगे राइट. तो जब उसको हम समझेंगे तब तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. तो पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है. तो उसके बाद हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये था हमारा बेसिक्स. थोड़ा बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करने हम अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस. Thank you and keep studying, keep learning.